Okay, so hello everyone. So today's vlog will be all about changing the engine oil and which engine oil you should prefer for your bike and what grade engine oil means what. So everything detail I will be telling you in this video. So first of all, before I start this video, I would like to say that Motul India have sent me this Motul 7100, which is 44 stroke motor oil. They have sent me this Motul 7100, which is 20W50, which is 100% synthetic. So आप लोगों ने कभी देखा होगा कि 20W50 होता है, 15W40 होता है, 10W3540 होता है. So basically these are the grades. So let me introduce you to this 20W. 20W means आप जिस जगह पे रहते हो. Suppose you stay in Delhi. So Delhi में क्या होता है, गर्मियाँ काफ़ी होती है. So उस समय आप 20W50 यूज़ कर सकते हो. So 20 is the minimum temperature and 50 is the maximum temperature. So ये इंजन ऑयल जो है वो इस तरह के रीजन के बाइक्स के लिए दिया जाता है, मतलब यूज़ किया जाता है बेसिकली. नाउ पीपल दोज हू स्टे इन लद्दाख, पीपल दोज हू स्टे इन दार्जिलिंग, पीपल दोज हू स्टे इन स्नोई रीजन, बेसिकली ठंड के जगह पे रहते हैं. सो दे विल यूज़ 10W30, 10W40 या फिर 15W40, 15W45, जो भी ग्रेड्स, अलग अलग कंपनी के जो भी ग्रेड्स होते हैं वो ये वाले यूज़ ऑयल करेंगे. आई होप सो दैट ये जो ग्रेड है 20W50, 10W40, बहुत सारे अलग अलग इंजन ऑयल के अलग अलग ग्रेड होते हैं. लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि क्या है 20, what is 20W40. So I have made this clear. So this means 20 means the first two digit means the minimum temperature and the last two digit means the maximum temperature. So this is all about. So this is a 1.5 liter Motul engine oil. Over here you get a scale. यहाँ पे 0 से लेकर के 1500 ml का जो ग्रेडिंग दिया हुआ है. अगर आपको आपकी बाइक में अगर 1 लीटर चाहिए तो यू कैन यूज़ इट टिल 1 लीटर. जैसे आई यूज़ बजाज 200 NS विथ ABS वर्जन, सो आई नीड 1.2 लीटर. सो आई विल बी यूजिंग 1.2 लीटर इंजन ऑयल एंड द रेस्ट 300 ml आई विल बी कीपिंग इट इन द बॉटल फॉर द अपकमिंग यूज़. कॉज होता क्या है कि जब आप बाइक चलाते हो, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बाइक चलाते चलाते इंजन ऑयल का जो लेवल है वो धीरे धीरे घटते रहता है द मोर यू राइड. सो बिफोर द इंटरवल कभी कभार क्या होता है कि आप जब काफ़ी लॉन्ग राइड्स में जाते हो तो आपका इंजन ऑयल का जो लेवल है वो काफ़ी घट जाता है. सो यू कैन यूज़ दैट 300 ml. आई एम नॉट आस्किंग टू पोर दैट एग्जैक्टली 300 ml. यू कैन पोर 30 ml, 40 ml or 50 ml or 100 ml maximum according to the need. The price of this is the net quantity is 1.5 liter and the price of this product is 1100 rupees, Indian rupees. So now let's get in front of the bike and इसको डालते हैं, and even I will show you that how to change engine oil along with the engine oil filter. So basically 200cc bikes like Bajaj 200 NS, Dominar, KTM Duke 200, 390 RC, जो भी बाइक्स है जो कि हाई सीसी बाइक्स है उनमें ऑयल चेंज करते समय आपको एक ऑयल फिल्टर भी आता है, आपको वो भी चेंज करना होता है. सो आई हैव ऑलरेडी परचेज दैट थिंग एंड नाउ आई हैव गॉट दिस इंजन ऑयल, सो आई विल बी चेंजिंग इट. सो या लेट्स गेट इन फ्रंट ऑफ द बाइक एंड आई विल शो यू हाउ टू चेंज द इंजन ऑयल. Okay, so now I'm talking behind the camera. So to take out the engine oil, so basically you have to open this. So for this you need this 4-head screwdriver and then you have to open up this and then you can a bit loosen up even this too and it will start hanging. So उसके बाद आपको लेना है ऐसा कुछ कटोरी जिसको आप यहाँ पे रखोगे and then you need this 18 mm का ये स्पिनर जिसको आप ऐसे यहाँ पे डालोगे. then you will put this and then you have to put it inside and you have to open this. Once you take out most of the oil you will find this, so you have to take it out. So let me keep it over here and as you can see engine oil जो है वो काफ़ी हद तक निकल चुका है. So I will wait for a bit and याद रहे जब आप इंजन ऑयल निकालो तो आपका बाइक जो है वो डबल स्टैंड पे हो. Now we'll move to the next part and we'll take out the oil filter. So moving to the next part, we have to open this. This is the oil filter. So
we have to open this. So now we have to open this. For this you need an 8 number wrench. फिर इसको ऐसे आप इसको खोल लो. This tool's name. So once you take it out, take out this. Okay. Kind of screwdriver so that it come out. So this is the oil filter. It's very hot. This is the oil filter. See, there are few little of oil and you have to move it out. So you are done with this. This is the new oil filter that I have bought from Bajaj. So इसका price है 74. So you have to take out this oil filter. And make sure that this hollow place get inside this. इसको अच्छे से अंदर डाल दो. Now tighten the screws. So once the screw got tightened, put this back on its own place. So once you're done with this, let's move on the other side. It's done. Take this filter back again and put it back in the same place, and make sure you put this screw back in the same place. So once you make it tight, make sure it's tight enough so that you don't lose it again or it don't open up. And then you have to tighten this screw. So now comes the main part. Once you're done, then try to open this with this plus. So we'll put this funnel over here. We'll take this Motul 7100 and we'll pour it. Once you're done, just take out the funnel and put this lock back to its own place, and take the plus again and then just tighten it so that it don't lose. So now let me show you. Can you see this? This is the oil level. So through here you check whether your oil level is in the optimum level or in the minimum level. So that's how I've changed the oil. So now we'll get in front of the camera at the count of 1, 2, 3. Okay, so back to the camera. So जैसे कि आपने देखा कि मैंने इंजन ऑयल जो है चेंज किया है, and I've got this Motul 7100 20W50 इंजन ऑयल मैंने डाला है. So let me guide you regarding something, few ground rules, few points and all. So जब भी आप इंजन ऑयल अपने से अगर चेंज करते हो, so make sure आप जो भी स्क्रूप्स है उसको अच्छे से टाइट करो ताकि वो किसी जर्किंग में किसी भी हालत में वो खुल के ना गिरे. खुल के गिरने से क्या होगा, आपका इंजन ऑयल जो है वो बाहर आ जाएगा, एंड इंजन ऑयल में इंजन कम होने के ऑयल कम होने के कारण आपका इंजन जो है वो ज़्यादा हीट अप होगा. Now Motul claims that this 7100 20W50 oil can last up to 10,000 kilometers. हालांकि I won't prescribe you guys to go for 10,000 kilometers. Try to change it within 6 to 7,000 kilometers. 6 to 7 is a sweet point of changing this
engine oil, and you can drag it till 8,000 in case if anyone is not doing any kind of harsh and off-road or kind of a long ride, तो आप उसको 8,000 किलोमीटर तक चला सकते हो. But according to my preference, you should change it within 6 to 7,000 kilometers. That is the sweet point of changing the engine oil. Guidance that I would like to give that जब भी आप engine oil डलवाओ, no matter आप मोटुल का डलवा रहे हो या फिर आप किसी और कंपनी का डलवा रहे हो, कोई सा भी आप इंजन ऑयल डलवाओ, उसको डालते ही या फिर उसको डलवा के सर्विस सेंटर से निकालते ही मैंने काफ़ी लोगों को देखा है हाईवे पे पहुंचने के बाद वो 100-120 उड़ाते हैं. ऐसा मत किया करो. इंजन ऑयल आप डलवाने के बाद एटलीस्ट फॉर 50 to 60 किलोमीटर्स या फिर मिनिमम 40 किलोमीटर्स के लिए आप उस बाइक को एक एवरेज स्पीड पे चलाओ, लाइक 45, 50 और 60 के स्पीड पे चलाओ, ताकि इंजन ऑयल को जो है वो अंदर में उसको फिट होने का मौका दीजिए. लाइक डोंट एक्सैजरेट सो हार्ड. उससे क्या होगा कि आप जितना तेज़ चलाओगे आपका पिस्टन उतना जल्दी अप एंड डाउन करेगा, उससे जो इंजन ऑयल ज़्यादा हीट होगा. सो गिव इट अ टाइम ऑफ 40 to 50 किलोमीटर्स एंड देन आफ्टर दैट यू कैन राइड इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. हालांकि आप कर सकते हो, उससे करने से क्या होगा, आपका इंजन ज़्यादा हीट होगा, आपका जो इंजन ऑयल है उसका जो विस्कोसिटी लेवल होता है वो काफ़ी हद तक डैमेज हो जाता है. सो माय प्रेफरेंस इज डोंट राइड दैट फास्ट आफ्टर पुटिंग द इंजन ऑयल. राइड इट इन अ स्लो वे फॉर 40 to 50 किलोमीटर्स. उसके बाद आप उसको चला सकते हो. सो फॉर द 50 किलोमीटर्स आप कोशिश करो कि आप अपना बाइक को जो धीरे चलाएं, 40 to 50 के स्पीड पे चलाएं. एंड yeah, that's all for today's vlog, and I hope so this video was very helpful for you guys, those who are opting for changing the engine oil in future. Well, I used to use this mineral oil, a Bajaj mineral oil. So now I have got this Motul 7100, so I'm hoping to look forward to use this engine oil in my future, cause this grades are very good. I mean, like it is more costlier than the Bajaj mineral oil, but yeah, you get a duration of around 7,000 kilometer, and इसका जो एक क्वालिटी जो मुझे बहुत अच्छा लगा, that is 100% synthetic engine oil. So yes, that's one of the plus point. And you must have seen, मैंने ये जो वीडियो था मैंने एक अप्रॉक्स 11 के टाइम पे बनाया था, मतलब 11 बजे के आसपास. एंड नाउ द टाइम इज़, लेट मी टेल यू, नाउ द टाइम इज़ 6:30. सो बीच में मैं थोड़ा सा ड्यूरेशन के लिए मैं बाहर गया हुआ था. सो आई रोड अराउंड 25 किलोमीटर्स इन द सिटी. सो मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, लाइक आफ्टर पुटिंग दिस इंजन ऑयल, इंजन का जो जो एक्सलेशन जो होता है, मतलब आपको जो फील होता है कि आपका इंजन जो है काफ़ी स्मूथ हो जाता है. So basically I'm not endorsing Motul, but I felt this to be given the credit to be given to the Motul, cause इसका जो इंजन का जो क्वालिटी obviously 100% synthetic है, and it's good. I prefer everyone to use this 7100 in a bike, and basically as far as I have the knowledge, I can put it in the Bajaj Dominar 400, KTM 200, KTM RC 200, Pulsar 200 NS, and there are other more bikes which जिसमें आप ये जो मोटुल का इंजन ऑयल है 7100 आप डलवा सकते हो. Yeah guys, with all that said, thank you so much for watching this vlog. I hope so this vlog was really helpful. If it was helpful, then do give a like, and if it wasn't helpful, I know there are a lot of people who don't feel anything to be as helpful, so they can easily dislike this video, and you can put down a comment in the comment section below. You can leave down your suggestions. आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप इसके बारे में क्या सोचते हो या नहीं, आप इसके रिगार्डिंग आप एक कमेंट कर सकते हो. And people those who want to follow me on Instagram, they can follow my Instagram handle, that is Bike and Niladri. You can follow my Facebook page, that is Bike and Niladri. You can also follow me on Twitter, that is Bike and Niladri. And people who want to send me mails regarding some queries, suggestions and all, you can mail me. My mail ID will be in the description box below, or else in the about section page of my YouTube channel. Before I wrap it off, I would like to tell one thing to you guys, that yes, do take care of yourself and your motorcycle too. With all that said, thank you so much once again. Bye bye, take care, and yes, ride hard, ride safe. Bye bye.